Hello, welcome to my channel again. My name is Pooja, and today we're gonna do this easy as brown smoky eye, not panda eye, step by step brown smoky eye tutorial. So let's not waste the time here. If you wanna do this perfect smoky eye brown one, keep watching. And yes, stop. Before we start going ahead, have you subscribed my channel? Go ahead and subscribe my channel, and then we will continue doing our tutorial. We are going to use here e.l.f. Camo Concealer. It's really good concealer from drugstore. Apply all over the lids. It will give you really nice full coverage concealer. And we're gonna use here brush from Real Technique. बहुत ही अच्छा ब्रश है, लॉन्ग लास्टिंग. मेरा तो ये डेली यूज़ हो रहा है फॉर माई आई मेकअप. अच्छे से ब्लेंड करो, टेक योर टाइम. Concealer always better than using the primer. I love to use concealer for eyelids. And blend it so nicely. Keep blending. मैं तो पूरा मतलब इतने अच्छे से टाइम लेके मेकअप करती हूँ, आई मेकअप, और नॉट जस्ट आई मेकअप, बेस मेकअप भी. देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्रग स्टोर पाउडर फ्रॉम Maybelline, लूज पाउडर. एंड अगेन वी गोना यूज़ ब्रश फ्रॉम रियल टेक्निक. इस पाउडर ब्रश बहुत ही अच्छा है. इट्स जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट बट it lasts you forever. These two brushes, first one for the concealer and another one for the powder, I use it every day basis. कितने भी ब्रश और ट्राई कर लो, I keep coming back to Real Technique. अफोर्डेबल भी है. पूरी आई को अच्छे से सेट कर दो with the powder, so it's not gonna craze, and your eye is gonna have a completely perfect base to start with eye makeup. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैट्रिक आई शेडो का पैलेट. इट्स वर्थ टू इन्वेस्ट, इतने अच्छे कलर है. एंड हम यूज़ करेंगे एमको ब्यूटी का ब्लैक काजल हियर. अप्लाई द काजल. यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट एंड प्रिसाइज. मैसी होगा तो भी चलेगा बिकॉज हम उसको ब्लेंड करेंगे. सो जस्ट अप्लाई इट close to the tight line. ये बहुत ही पिगमेंटेड है, so use it carefully. And हम ऐसे पेंसिल एंगल का ब्रश यूज़ करेंगे, स्मॉल वन, एंड ब्लेंड दैट ब्लैक काजल जो हमने अप्लाई किया है अच्छे से. काइंड ऑफ स्मोकी जैसा इफेक्ट आए. सो टेक योर टाइम विद ब्लेंडिंग because it makes huge difference with eye makeup. Blending. Eyeshadow may always take another your side time as well. Same for the base makeup as well. You don't have to rush the back things. Back and forth. Just merge it out. Just blend karo close to the tight line. Keep I really doing like it. This brush as well from the Morphe. Morphe makes really good brushes as well. अच्छे से वो जैसे smoky effect दे. Then I'm using from Morphe, Real Technique, e.l.f. They are really good brush. Worth to invest. फिर हम सेम ब्रश यूज़ करेंगे फ्रॉम पैट्रिक पैलेट. उसके बाद हम सेम ब्रश यूज़ करेंगे एंड वी विल यूज ब्राउन है कलर, वो लेंगे हम. एंड हम ये ब्राउन वाला क्रीमी आई शेडो आईलाइनर जैसे, एंड अप्लाई टू द क्लोज टू द ब्लैक काजल हमने जो पहले अप्लाई किया. क्लोज टू अप्लाई टू दैट जो हमने पहले अप्लाई किया, लाइक दिस. स्मज इट आउट, जस्ट क्लोज टू द टाइट लाइन, जस्ट blending it both together, kind of packing it the black color with it, and back and forth. Of course we want smoky, back and forth. So ऐसे अच्छे से ऐसे gradient effect आना चाहिए, black and on top of that brown. Keep doing the same way.
I'm going to do the same way to the other eye. Keep blending. कोई हार्श लाइन नहीं दिखना चाहिए. अच्छे से दोनों को मिक्स भी करो एट द सेम टाइम. उसको स्मोकी वाला भी इफेक्ट आए. देन हम यूज़ करेंगे ऐसे फ्लैट फ्लफी ब्रश. मॉर्फी का ही है अगेन. मैं मॉर्फी के बहुत सारे ब्रश यूज़ करती हूँ डेली बेस. और ऐसे लाइट ब्राउन कलर ले लो and apply it on eyelid. Of course, tap the excess. ऐसे अच्छे से पैक करो eyelid. एंड उसके बाद जिस कॉर्नर को हार्श लाइन को अच्छे से ब्लेंड कर दो राउंड मोशंस में. You can use more color. You can make it a little bit more dark if you want. I'm just doing a lighter smoky eye, not really dark one. But if you take a more color, you can make it slightly darker as well, which is gonna look nicer as well. Same for another eyes. Don't forget the corners. Of course, it's time consuming. Rush में नहीं होगा, so take your time. And start it slowly. You can always add more color, but you can't take it off. So start it slowly. Blend the harsh line. Then हम भी fluffy blush लेके ऐसे light brown color हम use करेंगे. Tap the excess, of course. And उसके बाद हम इसे apply करेंगे on crease. It's a gradient effect है वैसे. All over the crease, round and round motion from start to end. It's gonna give a really beautiful, nice smoky eye. Same for another eyes as well. मुझे बहुत पसंद है smoky eyes. मैं पहले बहुत डरती थी करने में. Now I know the perfect techniques, and if you follow this step, of course it's gonna look beautiful. फिर हम ऐसे पेंसिल जैसे ब्रश ले लेंगे and we'll take the cream color, tap the excess and apply it on the corners of the eyes. मुझे बहुत पसंद है ऐसे creamy और white color use करना, specifically on the corner of the eyes. And that's all. Again we'll use a black kajal for the waterline पे. Just a waterline, not. Be careful. ये वाला kajal is very pigmented. Best I have used so far from drugstore. And उसके बाद अगर ऐसे चाहो तो भी आप ब्लेंड कर सकते हो, बट आई लाइक टू ऐड ब्राउन कलर इन इट, स्पेसिफिकली ब्राउन काजल. तो हम यूज़ करेंगे ये वाला एसेंस का ब्राउन काजल एंड लोअर लाइन पे हम अप्लाई करेंगे. सेम फॉर अनदर आइज. एंड उसके बाद हम ले लेंगे एक वो वाला ब्रश जो हमने पहले ही यूज़ किया था एंड मिक्स इट द ब्लैक एंड ब्राउन कलर वेल टुगेदर. It will give a lower, less beautiful color. बहुत ही अच्छा लगता है.
आप ब्राउन कलर का आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड व्हाट यू लाइक. देन ऑफ कोर्स मस्करा बिना तो हमारा आई का मेकअप ख़त्म ही नहीं होता. सो वी गोना curl the lashes. Always curl the lashes before applying the mascara on both sides. And we're gonna use here Panorama mascara. Again, drugstore mascara. I don't think मैंने high-end mascara खरीदा है recently. Because drugstore इतने अच्छी product बनाता है, तो why we have to spend more money on high-end? I love drugstore makeup. Apply it well, outer corner, inner corner. ये वॉल्यूम भी देगा और लेंथ भी देगा at the same time. I'm not a big fan of using fake lashes, so I curl my lashes, take my time to do the mascara. Gives really natural, beautiful, good looking lashes. And that's all. What do you think of this brown smoky eye? And that's it's perfect it. for any occasions, So finish. perfect for going out, date night, also even any event, and specifically for the wedding, it works best. Give it a try and let me know. And if you want me to do any more tutorial, comment down below and I will make an easy video for you guys. And also don't forget to subscribe my channel. See you until next video.